Hello, 11th class political science students. Hope you all are doing great. Till now, we have done the three videos of the chapter Constitution Why and How. And I think that we are able to make the foundation of the chapter. And we have got the basic idea, major concerns of the chapter. What we have done till now, we have studied meaning of the term constitutions and its major functions. Right? And along with that, we have also studied that how the constitution are coming into the force and all these things. So in today's video, what we will study, we are going to study the factors which are determining the success of any constitution. Along with this, we are going to study that how the constitutions are coming into the force. And we will also study that how the people feel themselves secure in which type of country, in which type of constitution. How do the people feel themselves connected with the constitution? So let's start today. Here we are going to study mode of promulgation. What is promulgation? This term refers to the announcement of something. But here we are using the term just to refer that how a constitution comes into being, how the constitution comes into the force, and from where the constitution is having the authority, and those people who have made the constitution, who have framed the constitution, from where they have got the authority to do that work, to frame the constitution. Here are the examples that in the world there are some countries in which people do not have trust in the constitution, or constitution remains just defunct. What is the meaning of defunct? It means when the constitution is no in use. Now the question will be in your mind that why the constitution is not in use, why the constitution remain defunct only. So there can be a lot of factors behind it. उसके पीछे बहुत सारे factors हो सकते हैं, right? Let me give you one example from your daily life only. Suppose आपकी क्लास के लिए मॉनिटर बनना है and your class teacher randomly has announced the name of any student. आपकी क्लास टीचर ने क्या किया, कोई भी रैंडम नेम अनाउंस कर दिया that he or she will be the class monitor. लेकिन आप लोगों के दिमाग में क्या जाएगा, that he or she who is the class monitor, he is not a real representative. Why? Because you have not elected him. अगर वो representative है क्लास का तो he should be elected by you. And if he or she is not elected, then the question will be in your mind that you will not be that much satisfied with that person. And maybe you will not follow the instruction in which manner they should be followed. Right? And state is what? State is a larger form of human being only. Right? So the same thing will happen in the country also. Why the people will feel that the constitution is of no use? It will be determined by the framing process of the constitution. If the people are not having any kind of trust in the constitution, the basic reason behind it that those person who have framed the constitution, maybe citizens are not having trust in those people. लोगों का उसमें ट्रस्ट ही नहीं है. हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो किसी मिलिट्री ऑफिसर्स ने बनाया हो, मिलिट्री लीडर्स ने बनाया हो. Maybe the constitution is framed by those person who are not that much popular. कोई भी रीजन हो सकता है ना? But on the other side there are some countries जिनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है. इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका.
है ना? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है. So what is the logic behind it? Reason behind it? The reason behind it, the process of our constitution making. Because if we see the context of India, we will be finding that those person who have framed the constitution of our country, they were the crucial part of the national movement of the country. And if they were the part of freedom struggle, it means they were aware about each and every structure of the Indian society. They were aware about each and every problem of the society. And they were also aware that how can we overcome, how can we tackle all these issues and problems. And for that, our constitution makers has done an excellent work because from 1946 till 1949 we have devoted almost 3 years, 2 years, 11 months, 18 days for the framing of the constitution only. And that's why Indian constitution is world's longest written constitution. 9 December 1946 was the date when there was first meeting for the constitution making process. And on 26th of November 1949, we were able to make it, completely framed it. So, the basic reason behind the acceptance, behind the success, and behind the continuity of our constitution is basically its formation process. Reason one, that it was made by credible leaders, those person who were completely aware about our every situation, who were the part of freedom struggle. Now, come on the second thing, that how the constitution was framed, its complete process. It was also not easy because, as I have discussed already, that the constitution, or you can say the country, our country is having a huge diversity on each and every basis. And constitution, we were making for that much diverse country. It will be a difficult task, na? So how did the constitution makers tackle it? उन्होंने क्या मेथड अडॉप्ट किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी क्लॉज, जो भी आर्टिकल मेंशन हुए, पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुए. एवरी सिंगल क्लॉज. उसके बाद उस पर डिस्कशंस हुए, नेगोशिएशंस हुई. और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो सारे डिसीजन, सारे आर्टिकल्स मेजोरिटी के साथ पास हो गए, ओनली देन दे वर प्लेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस इतनी ज्यादा बेटर थी, इतनी ज्यादा डेमोक्रेटिक थी. And the result is in front of you, that we are able to accept it, we are willingly accepting it. Why? Because it is showing the consensus of every person. Every person feel that yes, my contribution is there. The constitution is looking around for my needs also. This was the second reason. Now, अब देखो क्या होता है, कुछ कंट्रीज में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कुछ कंट्रीज क्या करवाती है, रेफरेंडम करवाती हैं. रेफरेंडम, ये रेफरेंडम एक्चुअली में क्या होता है, इसको बोलते हैं जनमत संग्रह. यानी कि क्या, जनमत मतलब लोगों का मत, आइडिया, एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल. अब देखो क्या होता है, इन सम ऑफ द कंट्रीज दिस हैज टेकन प्लेस, that if we want to frame the constitution, firstly we should do referendum. It was the process in which people used to vote for the constitution, whether they accept it or reject it. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये भी नहीं हुआ, हमने कभी रेफरेंडम करवाया ही नहीं. राइट?
Reason behind it, again the same, that the leader of our constitution framers, or who framed the constitution, they were that much popular that people were having complete trust in them. इसीलिए क्या हुआ, that people accepted it on by on. और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जिससे अथॉरिटी गेन करता है, दैट इज द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री. हम क्या करते हैं, हम यही चेक करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं. And the Indian people are having complete trust in the constitution. We are able to see the examples in our daily life only. And its continuity from 1950, it is also showing that how much credible leaders we were having. How did they work that fabulous work? कैसे सारा वर्क हुआ है. तो यहां तक आप लोगों को क्या एक कंक्लूजन क्या मिला, कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उसकी सक्सेस इस बात से डिसाइड होती है कि उसकी बनने की प्रोसेस कैसी है, उसको फ्रेम किन सिचुएशन में किया गया है, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है क्या वो कंट्री के सेंटिमेंट्स को समझते हैं, क्या कंट्री के लोगों को उनमें ट्रस्ट है, जो बनने की प्रोसेस थी वो कैसी थी. All these factors determine the success of the constitution basically. कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन लोग उसमें ट्रस्ट रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन यूज में रहेगा या फिर ऐसे ही लोग उसमें ट्रस्ट खो देंगे. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. अब देखो, ऑन द राइट साइड देयर इज द एग्जांपल ऑफ नेपाल. नेपाल की स्टोरी, लेट मी टेल यू इन द स्टोरी मैनर ओनली. Nepal was the country in which there was the monarchy form of government. Monarchical form of government, what is that? In which head of the state, whose decisions run the state, that person is on hereditary position. Now, what is hereditary? That after the death of the king or queen, his son or daughter can be the next king or queen. Monarchy system. Nepal was having that kind of system only. But what happened when in all of the parts of the world there were demand for democracy? So Nepal, the people of Nepal also demanded for the same. और उन्होंने क्या किया? They have tried to make constitution 5 times. मतलब कुछ आइडियाज प्रोवाइड किए कि ऐसा ऐसी कंट्री की फ्रेमवर्क होनी चाहिए. In 1948, 1951, 1959, 1962 and 1990. बट जो लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या हुआ, उसमें कंट्री में एक्सेप्ट कर लिया गया मल्टी पार्टी सिस्टम. और जब मल्टी पार्टी सिस्टम आएगा तो उन पार्टी के लीडर्स ने क्या डिमांड करनी शुरू कर दी, डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स. बट मोनार्की में क्या होता है, मोनार्क इज हैविंग सम काइंड ऑफ एब्सोल्यूट पावर्स. बट इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या होने वाला था, पावर्स डिवाइड होने वाली थी. इसीलिए किंग ने क्या चाहा, किंग ने ये सोचा दैट आई विल नॉट शेयर माई पावर. और जब ऐसे टशल हुआ तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने भी प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, एजिटेशन शुरू कर दिए, दैट वी वांट आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू गवर्नमेंट. गॉट इट. इसके बाद फिर क्या हुआ कि इश्यूज चलते रहे, इशू और लोग डिमांड करते रहे, बट किंग के पास पावर ज्यादा थी, इसीलिए 2002 में उसने सारी की सारी पावर को ओवरकम कर लिया, कंट्रोल कर लिया. बट आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. उसमें क्या होता है कि आप जितना फोर्स किसी चीज पे लगाते हो, सामने वाली चीज भी आप पे उतना ही फोर्स लगाती है. अगर किंग ने क्या बोला, किंग ने अगर पावर को कंट्रोल कर लिया तो प्रोटेस्ट करने की जो स्पीड थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई, एजिटेशन और ज्यादा इंक्रीज हो गई. और फाइनली जब लोग इतने ज्यादा अग्रेशन में आ जाते हैं तो देयर वाज नो एनी मेथड टू एस्केप, and the king had to accept their demands.
और वन पार्टी वॉज देयर, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। और फाइनली क्या होता है, विद इन द प्रेशर, अंडर प्रेशर, द किंग हैड टू एक्सेप्ट देयर आइडियाज। और अब फिर क्या हुआ, इन 2008 नेपाल बिकेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब नाउ व्हाट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? Democracy, you all are aware, is a form of government in which we people are able to elect our leaders, our representatives, our government. But what is republic? We have discussed monarchy right now. That monarchy is a form of government in which head of the state is on hereditary position. But what will be republic? Republic will be a form of government in which head of the state is elected. For example, India, head of the state is the president of our country. And we are having elections for that thing also, for president also. So India is the example of republic. Finally, the same thing happened in the Nepal also, that Nepal became a republic. फिर उन्होंने क्या किया, जब रिपब्लिक बनेगा तो अब उन्होंने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट नाउ इट विल बी अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने का वर्क शुरू हुआ और फाइनली 2015 में दे हैव अडॉप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज द स्टोरी ऑफ नेपाल। आई थिंक इट इज आल्सो क्लियर टू यू। Now we are going to discuss the substantive provision of our constitution. Now we are going to study the hallmark of a successful constitution. मतलब अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है तो उसके पीछे रीजन क्या है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहा है तो उसके पीछे भी वो रीजन होंगे जिनकी कहीं ना कहीं आपको लैक देखने को मिलेगी उन कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरिजन में जो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा या फेल कर जाएगा? दैट आर दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that which kind of provisions you have given, you have mentioned in your country's constitution. As we have already discussed, in every country there are huge type of diversity. Let us take the example of India only. We are having diversity on every basis: caste, religion, gender, language. And on the basis of these minority, on the basis of these kind of differences, diversity, people are divided into lot of aspects. Some are in majority, some are in minority, some are rich, some are poor also. So if we are looking around the provisions of the constitution, which kind of provision we should include? The provision should be in that manner that every person can feel that yes, constitution is for him or her. They can feel that yes, they are also having some power in the country, they are also keeping an important place in the constitution, their ideas are also having any kind of role. Got it? यानी कि अगर देखो हमने कोई सिस्टम एस्टेब्लिश ऐसा कर दिया कि जिसमें बाउंडेशंस नहीं है लोगों के ऊपर, तो क्या होगा, देयर विल बी द कंसेप्ट ऑफ माइट इज राइट एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो स्ट्रोंग होंगे वो स्टे कर जाएंगे। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट दैट मच स्ट्रोंग? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोविजंस करने पड़ेंगे ताकि जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, वो भी फील कर सकें कि मेरी आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एबल टू फ्रेम अ जस्ट सोसाइटी। क्योंकि आपने लोगों को कन्विंस कर दिया है कहीं ना कहीं कि आपका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है कंट्री में, और आपने लोगों के माइंड में अश्योरेंस डाल दिया कि सोसाइटी में जस्टिस होगा ही होगा। तो ऐसे प्रोविजंस आपको करने पड़ेंगे।
If you see the example of Indian constitution, our minority people are able to think that my voting value is also the same and the voting value of the majority people is also same. Poor people feel that if I am not that much rich that I can afford everything, then my constitution is there, which will provide me everything, at least basic needs. Got it? So these kind of provision ensure justice in the society. But if we want to create a just society in actual form, we will have to include three factors. What are those three factors? Liberty, इक्वालिटी एंड जस्टिस. ये फैक्टर्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने ही पड़ेंगे. नाउ फ्रीडम इज व्हाट? Maybe you can think that freedom is something that in which we are able to do everything whatever we want to do, but that's not the freedom. Freedom means you are able to do work within some positive restrictions. Equality, equality doesn't mean कि आप सबको इक्वल कर दो, कि क्लास में चाहे कोई वीक बच्चा है चाहे कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है आपने सभी को 60% मार्क्स दे दिए. नो, दैट्स नॉट द इक्वालिटी. इक्वालिटी इज व्हाट? दैट यू आर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. जैसे आप स्कूल में जाते हो, सभी का सेम टाइम टेबल है, सेम टीचर्स हैं, तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है. द सेम इज विद द कंट्री, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा दो. And if we will be able to provide these kind of things to the people, what will happen? People will go with the constitution only. People will be able to develop their trust in the constitution. और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस कैसे डिटरमाइन होती है? कि वहां के लोग कॉन्स्टिट्यूशन से कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की डिमांड तभी होती है जब लोगों का ट्रस्ट उसमें नहीं होता है. And if you see the context of India, the people of our country have never demanded for the complete change of the constitution. Although there are some changes according to the changes situation. But we have never demanded for the complete change in the constitution. And that is the beauty of our country. And the reason behind it, the formation process of the constitution, the provisions of the constitution, and the major concern is that constitution is able to assure the identity to every group, to every person, that his or her concerns are important in the society. Every person, every individual is important in the society. And that's why result is in front of you. Our constitution is constantly working. I think every word is crystal clear to all of you till now. So till now we have got the major things of the constitution. From next video, we will study some more aspects of the constitution. I think till here everything is clear. Even then if you are having any kind of query, any kind of doubt, feel free to ask your doubts in comment section. And next part we will do in next video. Till then, stay connected, keep studying, keep learning. Thank you. Thanks a lot.